Hello everyone, I am Radhika from Neural Ninja's team of KV Jamalpur. We have worked on Smart Lecture Notes Generator for Viksit Bharat Buildathon 2025. I will be explaining the problem and the central causes and how to solve that problem. So, आज के समय में लेक्चर नोट मेकिंग स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइमिंग कंज्यूमिंग एंड टायरिंग हो जाता है. अगर कोई भी लेक्चर मिस हो जाए तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. स्टूडेंट्स के पास प्रॉपर नोट्स नहीं होते हैं और इससे अगर लेक्चर सुनते सुनते स्टूडेंट्स नोट्स बनाते हैं तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिस हो जाते हैं. स्टूडेंट्स फोकस नहीं कर पाते हैं टॉपिक पे, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती. स्टूडेंट्स स्ट्रगल टू टेक नोट्स वाइल फोकसिंग ऑन द लेक्चर. और ये टीचर्स के लिए भी एक्स्ट्रा वर्कलोड हो जाता है. टीचर स्टूडेंट को क्लास के बाद नोट्स प्रोवाइड करे, ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा टाइमिंग कंज्यूमिंग एंड एक्स्ट्रा वर्कलोड हो जाता है, जिसमें कि लेस एक्यूरेसी होती है. हैंड रिटन मिस्टेक्स और टाइपिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं और फॉर्मेटिंग इश्यूज भी होती है. सो स्कूल, टीचर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑल आर रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम. स्टूडेंट्स के पास प्रॉपर नोट्स नहीं होती है, जिससे कि उससे बहुत सारी परेशानियां होती है. फिर टीचर्स के लिए एक्स्ट्रा वर्कलोड हो जाता है. इंस्टीट्यूशंस बेटर क्वालिटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करने में मुश्किल हो जाती है. तो हमारा प्रोजेक्ट इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है? हमारा प्रोजेक्ट हमें जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा उस ऑडियो को रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे. अपलोड करने के बाद हमारा सिस्टम OpenAI GPT-40 मॉडल उस ऑडियो का ट्रांसक्रिप्ट जनरेट कर देगा. फिर AI उस ट्रांसक्रिप्ट को नोट्स में कन्वर्ट कर देगा, जो कि इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू रीड होगा. फिर उस नोट्स को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं और हम लोग उसे बाद में नोट्स में प्रिपेयर कर सकते हैं. Here is the full code of our smart lecture note generator. First, we are using the Flash server. Flash is a simple web application framework that connects the front end and back end. After that, upload and note folder are created. The audio file is saved in the upload folder. The transcript and final note are saved in the notes folder. When the user upload audio, we save it with a unique name. The name is created from a timestamp plus random ID so that files are not overwritten. The audio file is converted to text using the OpenAI GPT-4o transcript model. Now the entire transcript is sent to GPT-4o Mini to convert the transcript into clean, structured class note. Once we receive the note from the AI, we save both files and send them back to the frontend in JSON form. The user can download the transcript or note using the download link. Now I will show you how the smart lecture note generator program will work. You can see here an HTTP link has come. We have to copy this link and paste it in any browser. I am going to use Chrome browser here. After pasting, you can see audio to note browser recorder has come. After clicking on the start recording button, what you will tell in the recording, you will get note in this generated note column. Now I will show you how it is done. I am going to read class 11 economics chapter 1 from this part to this part. After clicking on start recording button, I am going to read the economics chapter 1. When you buy goods, you may want to satisfy your own personal need or those of your family or those of any other person to whom you want to make a gift. You are called a consumer. When you sell goods to make a profit of yourself, you may be a shopkeeper. You are called a seller. When you produce goods, you may be a farmer or manufacturing company or provide services. You may be a doctor, porter, taxi driver or transporter of goods. You are called a seller. After reading, you have to stop and upload. It is going to uploading to the server. You can see
The transcript has come here and generated note is also come here. If you want to download the transcript, you have to click on the download transcript button. You can see here our transcript has come here. And if you want to download note, you have to click on the download notes button. You can see here your notes has downloaded. This is how our smart lecture note generator program will work. Thank you.